स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8, दैट इज सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ऑब्जेक्टिव है टू कंप्यूट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन कोएफिशिएंट a, b and c आर नोन। सॉफ्टवेयर इज विजुअल स्टूडियो कोड। Prerequisite: understanding of Python data types, Python input, output and import एंड पाइथन ऑपरेटर। अगर आपने आज से पहले हमारे पाइथन थ्योरी के सेशन नहीं देखे तो प्लीज पाइथन थ्योरी के सेक्शन देख लीजिए। लेक्चर 2 जहां पे पाइथन वेरिएबल एंड डेटा टाइप मिल जाएगा, लेक्चर 3 पाइथन ऑपरेटर इन पाइथन मिल जाएगा, लेक्चर 4 बिटवाइज ऑपरेटिंग पाइथन मिल जाएगा और लेक्चर 5 दैट इज पाइथन मॉड्यूल and last is 15 that is a understanding of input and output Python. After that comes to this particular practical जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a² plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real number and a does not equal to 0. The solution of this quadratic equation is given by minus b plus or minus b square minus 4ac square root divided by 2a. So let's try to solve this particular equation with the help of Visual Studio Code. We have to solve the quadratic equation a² plus bx x square plus bx plus c equal to 0. So for that, import complex math module. So I have to import C math that is available. So C math. Then let's given as a equal to 1, then b equal to 5, c equal to 6. Then calculate minus b minus c math dot sqrt is available sqrt of d divided by 2 into a. So that is the first solution, minus b under root of b square minus 4ac divided by 2a. Now second is solution, that is solution 1. Now solution 2 is that is equal to solution 2 is minus b plus c math dot square root d divided by 2a. Now we have to print this solution. So print solution 1 solution 1 is comma solution 1 and similarly solution 2 is solution. Okay, so first save this program, then run python main.py. That is save as python main.py. So run this python main.py. So that is solution minus 5
5 plus 0j, and solution T2 is minus 4.5 plus 0j. So minus 5.5 is the real part, imaginary part is 0. So that is the final solution that we can get with the help of Python. So that is the code for the same, and you get the conclusion that we have imported CMath module to perform complex square root and solve the quadratic equation. Hope you enjoy this particular program. If you want to ask any question, then do in the comment, and if you like this particular video, then share with your colleagues or subscribe to the channel. Thank you.